Alright, so check this out. I asked an AI image generator for a transparent smartphone from 2035. Minimalist, matte black, with a floating holographic display. In under a minute, it gave me a dozen photorealistic concepts. Some were wild, but a few looked ready for a real product launch. It even whipped up a catchy jingle and a marketing script. All of this, visuals, audio, copy, done in 5 minutes. This is generative AI and it's already transforming how we create. For decades, computers helped us execute ideas. Now, AI can originate them. It's like having a creative partner, one that never sleeps and always has new ideas. The impact? It's lowering the barrier to entry for artists, musicians, writers, anyone with an idea. You don't need years of training to get started, just a prompt. Generative AI doesn't replace skill or vision, but it gives everyone a launchpad. It's democratizing creativity, putting powerful tools in millions of hands. The future isn't about replacing artists, it's about augmenting them. The best creators will blend their vision with AI's power. The only real limit now? How fast you can imagine. It's an incredible time to be a creator. So, what exactly is generative AI? It's artificial intelligence that creates new content. Images, music, text, even code. Instead of just analyzing data, it generates things that never existed before. Think of it as a student who's read millions of books and can now write a poem in any style. These models learn patterns from massive data sets, billions of images, endless text. They don't memorize, they predict what comes next based on probability. It's not true understanding, but it's an incredible mimic of human creativity. Generative AI is a pattern-matching machine on steroids, synthesizing new content from what it's learned. That's why it's popping up everywhere. It's a whole new way to interact with computers. So, how does generative AI actually work? There are a few main types of models. GANs, or generative adversarial networks, pit two AIs against each other, one creates, one critiques, until the results look real. Diffusion models like those behind Midjourney start with random noise and gradually reveal an image based on your prompt. Transformers, the backbone of ChatGPT, excel at understanding context in language, making conversations feel natural. They use attention to focus on the most important parts of your prompt. VAEs, or variational autoencoders, compress data into a simplified form, then reconstruct and remix it to create new variations. Each model type has its strengths, but together, they're powering the creative AI revolution. Whether it's art, text, or music, these models are the engines behind the magic. The result? AI that can generate, remix, and adapt content in ways we've never seen before. It's not magic, it's math at an incredible scale, and it's only getting better. That's the foundation of generative AI. Where is this tech making waves? Art and design, for starters. Tools like DALL-E and Midjourney let anyone create stunning visuals in seconds. Designers use AI to brainstorm, prototype, and test ideas faster than ever. In music, AI generates custom tracks, suggests melodies, and even clones voices. Writers use language models to brainstorm, outline, and break through creative blocks. Developers get AI coding assistants that write, debug, and optimize code on the fly. AI isn't replacing creativity, it's supercharging it. The result? Faster workflows, more ideas, and new possibilities for everyone. Whether you're an artist, musician, writer, or coder, AI is now your creative sidekick. The creative process will never be the same. Generative AI is revolutionizing science and business too. In medicine, it designs new proteins and molecules, speeding up drug discovery. Engineers use AI to generate thousands of optimized designs for bike frames to airplane parts. In marketing, AI creates personalized ads, images, and videos for every customer. Businesses use AI to analyze trends, generate reports, and automate communication. Even material science is changing. AI predicts new compounds for better batteries and solar panels. The result? Faster innovation, smarter decisions, and breakthroughs across industries. Generative AI isn't just for artists. It's a catalyst for progress everywhere. The possibilities are just beginning. But it's not all upside. There are real challenges. Deepfakes and misinformation threaten trust and democracy. AI models can reinforce harmful biases from their training data. Copyright and ownership are murky. Who owns AI-generated art? These are tough legal and ethical questions we're only starting to answer. Still, the potential is huge, real-time, collaborative AI for everyone. Imagine designing a building with AI adjusting the structure as you go, or writing a script with instant concept art. The goal? Make these tools accessible to all, not just experts. As AI gets easier to use, creativity and productivity will explode. The key is thoughtful navigation.
so we harness AI for good. What excites you most about this future? Have you ever wondered what the future of medicine looks like? Imagine walking into a hospital not with a sense of uncertainty, but with the confidence that every single detail of your health is being understood. In this near future, your well-being is assessed not just by a highly skilled doctor, but also by a powerful, ever-vigilant partner, artificial intelligence. This isn't some far-off science fiction concept. It's a revolution that is unfolding in clinics and research labs right now. AI is fundamentally transforming diagnosis, acting as a hypersensitive digital stethoscope. It's listening to our bodies in ways that were previously impossible, hearing the silent language of our cells, the subtle rhythms of our heartbeats, and the intricate stories told by our DNA. Think of this AI as a supercharged assistant for medical professionals, an incredible mind trained on a global library of millions of medical records, images, and research papers. Because of this vast knowledge, it can spot patterns completely invisible to the human eye. It can see the faintest shadow on an X-ray that signals the very earliest stage of cancer. It can detect a minuscule flutter in an EKG that might predict a future heart condition, allowing for intervention before it ever becomes a crisis. But let's be clear, AI doesn't replace our doctors. It empowers them. It's a powerful second opinion, a tireless partner in care. This is about augmenting human expertise, not automating it. The AI provides the data-driven insights, while the doctor provides the essential human wisdom, empathy, and context to make the best decision for you. By analyzing this colossal amount of data, from your scans and blood tests to your genetic sequences and even lifestyle factors, AI learns to distinguish the unique signature of health from the first signs of abnormality. Today, AI is already helping radiologists catch breast cancer with greater accuracy, reducing missed diagnoses. It helps dermatologists prioritize the most suspicious skin lesions for immediate attention. And for cardiologists, it's a crucial tool for predicting heart attack risk, enabling them to create personalized prevention plans. These aren't just future promises, they are real-world tools improving and saving lives today. The diagnostic revolution is here, making medicine faster, smarter, and more precise than ever before. Welcome to the new age of proactive, personalized, and truly preventative healthcare. How does diagnostic AI actually work? It starts with massive, diverse datasets, medical images, lab results, patient histories. Experts label this data, teaching the AI what's healthy and what's not. The AI then trains on these examples, learning to spot disease patterns through millions of iterations. It's not just memorizing, it's developing digital intuition, much like a seasoned doctor. After training, the AI is tested on new data to ensure accuracy and reliability. Only the best performing systems are integrated into clinical workflows. In practice, AI acts as an assistant, highlighting suspicious areas on scans, suggesting probabilities, and surfacing similar cases. Doctors use these insights to focus their expertise where it matters most. The final diagnosis always rests with the human clinician. This partnership blends machine precision with human judgment. Together, they deliver better, faster care. The benefits of AI in diagnostics are profound, touching on speed, accuracy, and accessibility. For patients, this means getting answers faster and more reliably than ever before. Imagine an AI sifting through hundreds of complex scans in moments, spotting subtle anomalies the human eye might miss. This efficiency reduces anxious wait times and enables the earliest detection of diseases when they are most treatable. This technology also acts as a great equalizer, helping standardize care. A small rural clinic can offer diagnoses with a reliability once only found in major hospitals. In underserved areas, AI empowers general practitioners to screen for conditions like diabetic retinopathy using just a smartphone, bringing specialist-level care directly to the community. But with this power comes great responsibility. Algorithmic bias is a serious risk. If an AI is trained on limited data, it can perpetuate health disparities. Ensuring diverse, representative datasets is therefore essential to fairness, preventing the system from missing diseases in underrepresented groups. Data privacy is another fundamental concern. AI relies on sensitive health information that must be rigorously protected to maintain patient trust. Robust safeguards and clear regulations are needed to build public confidence. The ultimate goal is to close gaps in care, not create new ones. With careful oversight and a commitment to inclusion, AI can be a revolutionary force for health equity, making high-quality care accessible to everyone, everywhere. The future of AI in medicine isn't just about powerful algorithms. It's built on a foundation of trust.
This requires strong ethics and clear accountability. Who is responsible when an AI makes a mistake? How do we ensure patient data is secure? By creating transparent standards for development and use, we ensure every innovation is guided by a single, unwavering principle: patient safety. There's a common fear that AI will replace doctors, but the reality is far more collaborative. AI is perfectly suited to handle relentless, data-heavy tasks, like analyzing complex scans and identifying subtle patterns. This doesn't push doctors out. It frees them up to do what they do best: connect with patients on a human level, providing empathy and context. Imagine an AI analyzing your medical history and genetics, suggesting potential diagnoses. Your doctor then takes that information, combines it with their experience, and works with you to decide the best path forward. This powerful collaboration enables truly personalized, proactive care, predicting disease risk and tailoring treatments. It's a fundamental shift from reactive to preventive medicine, empowering healthier lives. AI is a tool, not a threat. Like the MRI or microscope, it extends our abilities. By embracing this partnership, we create a more accurate, efficient, and accessible healthcare system. The journey is just beginning, but the goal is clear: the best care for every patient. This is the diagnosis revolution, where human and machine work together for better health. Artificial intelligence is making decisions all around us, approving loans, diagnosing diseases, recommending who gets hired. But have you ever asked, how did it come to that decision? Can I trust a system if I don't understand it? In this video, I'll break down Explainable AI, XAI, what it is, why it matters, and how it could shape the future of trustworthy technology. So what is Explainable AI anyway? Traditional AI models, especially deep learning, are often called black boxes. They take in data, spit out a decision, but leave you in the dark about the why. Explainable AI, or XAI, is all about opening that black box. It's a collection of tools and techniques that help humans understand and interpret how AI models come to their decisions. In other words, XAI equals sign tools that make AI decisions transparent and understandable to humans. Now, why does this matter? In real life, AI decisions can be high stakes. Imagine being denied a loan and not being told why, or an AI system in healthcare misdiagnosing a condition. Without transparency, you can't challenge it, fix it, or even understand it. XAI helps in 4 big ways. First, trust. We're more likely to adopt AI we actually understand. Second, accountability. If you can audit how AI made its choice, you can detect bias or correct errors. Third, compliance. Regulations, like the EU's GDPR, demand explanation rights. Finally, improvement. When you know how the system works, engineers can debug and improve things more easily. So, how do we actually make AI explainable? There are a few key methods. First, feature importance. This method ranks which input features influence the outcome most. For example, for a loan income, debt, and credit score might be ranked according to their impact. Next, upLIME or local interpretable model agnostic explanations. LIME creates a simple model that mimics the complex AI, but only for a single decision. It's like making a mini decision tree that just explains one result. Then there's SHAP, short for Shapley Additive Explanations. This one's based on game theory, and it assigns credit, or blame, to each feature. Think, this feature added 0.3 to your score, this one subtracted 0.2. Counterfactual explanations are another method. What if your salary was $5,000 higher? Would the decision have changed? These what-if scenarios help you see what you could adjust. And for images, there are saliency maps. These highlight which parts of an image influence the model's decision. Did it detect the dog, or just the background? But of course, XAI isn't perfect. The biggest challenge? The trade-off between interpretability and accuracy. Simple models like decision trees are easy to explain, but not as powerful. Complex models like neural networks are super accurate, but nearly impossible to fully interpret. There's also a risk that explanations get too simplified, so they're easy to understand, but don't actually capture what the AI really did. The future of XAI is about collaboration, humans and AI working together where machines can explain themselves clearly. We're seeing more tools that make AI explainability accessible, not just to developers, but to everyone. Teachers, doctors, even job applicants. And with regulations tightening, companies won't just want explainable AI, they'll be required to have it. So next time an AI makes a decision, ask yourself, do I know why? And more importantly, should I? Explainability equals trust, accountability, and ethics. Like this video if you learned something new, comment below with your thoughts on AI transparency.
and subscribe for more deep dives into the tech shaping our world. Imagine watching a video of a president declaring war, a beloved actor reprising their role decades after their death, or a phone call from your boss instructing you to wire millions to a secret account. But here's the twist. None of it ever happened. Welcome to the strange, thrilling, and deeply troubling world of deepfake technology. Deepfakes are hyper-realistic synthetic media created using advanced artificial intelligence. Most rely on generative adversarial networks, two neural networks locked in a digital duel. One generates fakes, the other tries to spot them. Over time, they get better and better, until the line between real and fake is almost invisible. It's not all doom and gloom. The potential for good is profound. At the Dali Museum, visitors meet a lifelike Salvador Dali, an AI trained on hours of the artist's interviews and writings. The result is a surreal educational experience that's clearly labeled as synthetic. This transparency is key. It's not about deception, but connection. It's a powerful example of using AI ethically to bridge the gap between past and present, allowing art to speak in a completely new way. Tools like Deep Nostalgia also tap into this power for connection, letting families animate old photographs. By mapping subtle movements onto a still image, a stoic ancestor can suddenly blink and smile. It's an incredibly moving experience that brings history out of the photo album, creating a tangible link to loved ones, and vividly bringing them back to life. Unfortunately, for every positive application, a darker counterpart emerges. Deepfakes have become powerful weapons for abuse and sophisticated fraud. In Hong Kong, scammers staged an entire video conference call, using deep-faked versions of a company's CFO and other employees to trick a worker into transferring $25 million. The damage isn't just financial. Malicious actors use this technology to create non-consensual explicit images, disproportionately targeting women. In politics, fake robocalls mimicking candidates spread disinformation to suppress votes. During wartime, propaganda deepfakes of world leaders are designed to sow chaos and undermine national security. The core threat is the erosion of our most fundamental currency, trust. When we can no longer believe what we see and hear, the very fabric of our shared reality begins to fray. The danger isn't just in the lies we believe, it's in the truth we stop believing. Experts call this the liar's dividend. Once people know deepfakes exist, they can dismiss even authentic evidence as fake. Without trust, our shared sense of reality starts to crumble. As the threat of malicious deepfakes grows, a global legislative pushback is gaining momentum. In the United States, California bans non-consensual deepfake pornography, while the UK's Online Safety Act criminalizes sharing intimate deepfakes. The European Union's landmark AI Act mandates that AI-generated content must be clearly labeled. This evolving patchwork of regulations is a crucial first line of defense. But this has also sparked a technological arms race. Innovators are fighting fire with fire, embedding invisible digital watermarks to verify authenticity. Defensive AI models are being trained to spot forgeries by analyzing pixels and biological cues invisible to the human eye. And content provenance systems are creating a kind of digital birth certificate for media, providing a verifiable history from camera to consumer. Ultimately, the most powerful defense lies with us. The ethical burden requires asking critical questions. The first is consent. Do I have explicit, informed permission? Is the context unambiguous, clearly art or satire? Am I being transparent that this is synthetic media, not trying to deceive? Finally, have I considered the potential for harm, not just to the individual but to public trust? The power to create is also the responsibility to protect. Deepfakes are here to stay. This powerful technology is a double-edged sword. On one hand, it can resurrect history, empower art, and give voices back to the voiceless, restoring a fundamental part of their identity. It can create immersive experiences and unlock new forms of communication. But this same power can be twisted into a weapon. In the wrong hands, it becomes a tool to deceive, to spread disinformation that can sway elections or incite violence. It can be used to exploit and harass, creating non-consensual content to ruin lives and ultimately destroy trust. The technology itself is neutral, a complex algorithm without intent. The choice, therefore, isn't in the code, it's in us.
This responsibility falls on developers, on the platforms that host content, and on the lawmakers who must create frameworks for its ethical use. This isn't a battle for tech experts alone. It's a societal challenge that demands a collective response. In a world where seeing is no longer believing, our responsibility has fundamentally changed. It's no longer enough to simply detect the truth. We must actively defend it. This means fostering a new kind of digital literacy. Learn more. Think critically. Question what you see. The future of our shared reality depends on our collective vigilance and our commitment to the truth. In the digital battlefield of cybersecurity, artificial intelligence has become the ultimate game changer. While traditional security systems fight yesterday's battles, AI predicts tomorrow's threats. Traditional rule-based systems can only catch known threats. Zero-day attacks slip through like shadows in the night. AI advantage is clear. Machine learning models learn patterns of normal behavior and flag anomalies instantly. Take Darktrace, for example. Their AI detects abnormal internal traffic, like a hacked IoT device trying to contact an unusual server. Deep learning can analyze millions of logs per second to detect suspicious login attempts, ransomware behaviors, or botnet activities. Human SOC analysts face thousands of alerts daily, leading to dangerous alert fatigue. AI-driven security orchestration, automation, and response platforms can quarantine suspicious files, isolate infected endpoints, and block malicious IPs automatically. In financial security, AI monitors real-time transactions for anomalies, checking if spending patterns deviate from normal behavior. Visa and MasterCard use AI to detect fraud within milliseconds before transaction approval. User and entity behavior analytics learns baseline behavior for each user and device, detecting deviations like logging in from multiple countries in 1 hour. Companies like Splunk and Exabeam use AI-driven UEBA to reduce insider threat risk. AI in email security uses NLP to scan for phishing cues, suspicious domains, grammar patterns, and urgency tones. Cylance uses AI to predict malware with 95% plus accuracy through both static and dynamic analysis. Multiple AI techniques power modern cybersecurity. Machine learning classifies traffic, deep learning detects malware, NLP identifies phishing, and graph neural networks uncover botnets. AI brings unprecedented speed and scale, analyzing terabytes of data in seconds. It enables proactive defense, predicting attacks before they execute. AI provides 24/7 monitoring without human fatigue, reducing errors and assisting SOC teams with intelligent decision-making. However, challenges remain. Adversarial attacks can poison training data or craft inputs to fool AI systems. False positives can overwhelm teams, while data privacy concerns and AI explainability issues create additional hurdles. The future promises AI-driven SOCs that are 70 to 90% automated, with humans handling only critical escalations. We're entering an era of AI versus AI warfare where both attackers and defenders leverage artificial intelligence. AI in cybersecurity isn't just about detecting attacks, it's about predicting, preventing, and responding faster than humanly possible. The question isn't whether AI will transform cybersecurity, it's whether you're ready for that transformation. Imagine hearing a song no human ever wrote, or looking at a painting that feels like Van Gogh made it, but was created in seconds by artificial intelligence. This is the new frontier of creative expression. AI-generated art and music are creations made with artificial intelligence. Instead of a human painting every detail, these systems are trained on vast data sets. They use patterns from millions of works to create something new and original. Type a prompt like, a futuristic city glowing in neon colors, and instantly get a digital painting. Or describe a feeling like a melancholic piano melody, to generate a brand new tune in your favorite artist's style. Pioneering tools like DALL-E, Midjourney, and Stable Diffusion create these stunning images, while Music LM and AIVA are composing the soundtracks of the future. These systems train on massive datasets, absorbing centuries of human culture, from classical music and pop hits to Renaissance paintings and modern anime. They learn the intricate styles, rhythms, and patterns, then generate entirely fresh combinations. This makes high-level creativity accessible to everyone. Artists are already using it for stunning album covers, immersive video game soundtracks, and innovative fashion design, treating AI as a genuine creative partner. You don't need to be a master painter or composer, just someone with an idea. The AI can spark the initial inspiration, while the human provides the crucial refinement and emotional depth. But this progress sparks a fierce controversy. Is AI genuinely creative or just a sophisticated mimicry of existing human work?
Legal systems grapple with ownership. Who holds the copyright? Some artists see a threat, fearing their work will be devalued. Others embrace AI as a powerful new tool, a collaborator that pushes creative boundaries. As a result, the line between human and machine-made art is getting blurrier every single day. So what do you think? Should AI be considered an artist or just a tool? Let me know in the comments below. Don't forget to like, share, and subscribe for more deep dives into the future of technology and creativity. Machine learning, generative AI, these terms are everywhere, promising to revolutionize how we work, create, and live. But behind the hype, what do they actually do? It's easy to get them confused. While they are related, like cousins in the vast family of artificial intelligence, they have fundamentally different goals. Understanding this distinction is the first step to truly grasping the power that's reshaping our world. So, let's break it down. Let's start with the established powerhouse, machine learning or ML. Think of it as a brilliant pattern finder. You feed it a massive collection of data, anything from financial transactions to medical images or customer behavior. The ML model sifts through this data not to create something new, but to uncover hidden patterns. Its core job is to analyze what's already there to make incredibly accurate predictions or decisions. It's the engine behind the recommendation systems on Netflix, the spam filter in your email, and the fraud detection that protects your credit card. It's all about learning from the past to optimize the future. Now let's turn to the new star of the show, Generative AI, or Gen AI. If ML is a pattern finder, Gen AI is a creator. It also learns from vast amounts of data, the internet's worth of text, images, and sounds. But its purpose isn't just to analyze. It uses its deep understanding of patterns to something entirely original. It can write an email, compose a symphony, or create stunning artwork from a simple text description. It's not just predicting the next logical step, it's taking a creative leap into the unknown, producing content that has never existed before. So, what's happening under the hood? Traditional ML often uses specific algorithms trained on structured data to perform a single, well-defined task. Generative AI, on the other hand, relies on what we call foundation models. These are colossal neural networks trained on an unimaginable scale of diverse data, which gives them their incredible versatility and creative power. They understand context, nuance, and style. To put it simply, think of machine learning as a brilliant analyst, giving you the best answer based on existing facts. Generative AI is a creative partner, helping you imagine entirely new possibilities. So where do we see these technologies? You encounter machine learning daily, often without realizing it. Think of Netflix recommending your next binge watch based on your viewing habits, or your bank instantly flagging suspicious transactions to protect you from fraud. In industry, ML predicts when a machine might fail, preventing costly downtime. It's the silent workhorse optimizing systems behind the scenes. Then there's the headline-grabbing generative AI. This is the creative force. Tools like ChatGPT assist with everything from writing emails to generating code. Platforms like Midjourney and DALL-E turn simple text prompts into stunning original artwork. And in customer service, intelligent AI agents are providing personalized 24/7 support, transforming user experiences by resolving issues instantly. While Gen AI seems like the star, it's crucial to remember it's built on the solid foundation of machine learning. It's a specialized evolution, using the same core principles of learning from data, but with a different goal: creation instead of prediction. So, which is more important? It's a trick question. They are complementary forces, not competitors. Traditional ML is the backbone for critical industries like finance and healthcare, where accuracy and reliability are paramount. Generative AI excels in creative fields and user interaction, where innovation is key. The future isn't about choosing one, but about how they will combine to solve even bigger challenges. So, looking ahead, what are the key trends? In traditional machine learning, 3 areas are booming. First, Tiny ML, which runs powerful AI on tiny, low-power devices like smart sensors, preserving privacy by processing data locally. Second, Explainable AI, or XAI. As AI makes critical decisions, XAI opens up the black box to show how a model reached its conclusion, building trust. Finally, there's MLOps. This is the engine room of enterprise AI, automating the entire ML lifecycle so companies can reliably deploy models at scale. Now for generative AI, where the pace is breathtaking.
AI co-pilots are becoming standard, assisting in writing, design, and planning in everyday apps. Then there's multimodal AI, which understands and generates a mix of text, images, and video, turning a description into a short film. We're also seeing a surge in hyper-personalized AI agents, tutors that adapt to your learning style or wellness coaches that understand your health journey. Generative AI is getting the buzz and investment today. But remember, classical ML is the invisible engine quietly powering the world. So if you're starting out, where should you focus? Here's my advice. Want to become a data scientist uncovering insights that drive strategy? Learn machine learning. You'll be the architect of the core intelligence. Want to build the tools people interact with, creating magical user experiences? Learn generative AI. You'll be the designer of the conversation. Want to do both? My strong recommendation is to learn ML first. Understanding the fundamentals of data and training provides the solid foundation you need before moving to the complexities of Gen AI, making you a truly versatile AI expert. Now you know the difference between machine learning and generative AI, and why both matter in 2025. The next time you hear about an AI breakthrough, you can ask, is this a predictive engine or a creative partner? Understanding that distinction is your key to navigating the future of technology. दोस्तन, सोचो, फोन उठाया, चेहरे पे नजर डाली और अनलॉक हो गया। नो पासवर्ड, नो पैटर्न, बस आपका चेहरा। ये कोई साई-फाई नहीं, आज की रियलिटी है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग आवर वर्ल्ड, मेकिंग थिंग्स फास्टर एंड सिंपलर। लेकिन फेशियल रिकॉग्निशन है क्या? सिंपल बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक है, वैसे ही आपका फेस भी। सॉफ्टवेयर आपके चेहरे के यूनिक फीचर्स को स्कैन करता है और एक डिजिटल फेस प्रिंट बनाता है। ये फेस प्रिंट फोटो नहीं, एक डिजिटल मैप है। आईज के बीच की दूरी, चिन का शेप, नोज की लेंथ, सब कुछ एक मैथमेटिकल कोड में कन्वर्ट होता है। ये कोड डेटाबेस में स्टोर होता है, रेडी टू मैच जब भी कैमरा आपका चेहरा देखे। आज फोन से लेके एयरपोर्ट्स तक फेशियल रिकॉग्निशन हर जगह है। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट कीज, कार्ड्स या पासवर्ड्स, बस आप और आपका चेहरा। लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ सवाल भी आते हैं। क्या ये कन्वीनियंस किसी प्राइस पर मिल रही है? फेशियल रिकॉग्निशन का सफर अभी शुरू हुआ है और हम इस जर्नी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के मैजिक के पीछे का साइंस समझने। तो ये काम कैसे करता है? 3 सिंपल स्टेप्स: डिटेक्शन, एनालिसिस, मैचिंग। पहले कैमरा आपका चेहरा डिटेक्ट करता है, इवन भीड़ में। फिर सॉफ्टवेयर आपके चेहरे के की पॉइंट्स, आईज, नोज, जॉ लाइन मेजर करता है और एक 3D मैप बनाता है। ये मैप एक यूनिक न्यूमेरिकल कोड यानी फेस प्रिंट में बदल जाता है। अब सिस्टम इस फेस प्रिंट को डेटाबेस से कंपेयर करता है। अगर मैच हो गया, एक्सेस मिल जाता है, जैसे फोन अनलॉक या एयरपोर्ट चेक इन। पुलिस भी इसी तरह सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सीसीटीवी फुटेज से फेस प्रिंट मैच करके। एआई और मशीन लर्निंग से सिस्टम हर स्कैन के साथ स्मार्टर होता जाता है। ग्लासेस, बियर्ड या कैप हो, ज्यादातर केसेस में पहचान लेता है। लेकिन एक्यूरेसी कैमरा क्वालिटी और लाइटिंग पर भी डिपेंड करती है। हर सेकंड बहुत सारा पर्सनल डेटा कैप्चर और एनालाइज हो रहा है। अब देखते हैं ये टेक्नोलॉजी यूज कहां हो रही है। सबसे कॉमन यूज स्मार्टफोन्स, अनलॉक, पेमेंट्स, सिक्योर एप्स, सब कुछ चेहरे से। एयरपोर्ट्स में सीमलेस चेक इन, सिक्योरिटी और बोर्डिंग फेस ही टिकट है। स्कूल्स अटेंडेंस के लिए यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आते ही कैमरा स्कैन करता है। पुलिस क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करते हैं सीसीटीवी फुटेज से मैच करके। रिटेल स्टोर्स लॉयल कस्टमर्स को पहचानते हैं, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स देते हैं और सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। शॉपलिफ्टर्स को स्पॉट करने में भी मदद मिलती है। फेशियल रिकॉग्निशन हर जगह इंटीग्रेट हो रहा है। पर्सनल लाइफ, पब्लिक सेफ्टी, बिजनेस, स्पीड, कन्वीनियंस, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, ये सब बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी फैल रही है, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी सामने आ रहे हैं। क्या कांस्टेंट मॉनिटरिंग सही है? चलिए इस डिबेट को एक्सप्लोर करते हैं।
हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं, फायदा भी, रिस्क भी। फेशियल रिकॉग्निशन से लाइफ इजी हो सकती है। नो पासवर्ड्स, नो आईडी कार्ड्स, फास्ट सिक्योरिटी। लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी ये गेम चेंजर है। लेकिन प्राइवेसी का क्या? हर जगह कैमरास, हर मूवमेंट ट्रैक हो सकता है। मैस सर्वेलेंस का रिस्क है। गवर्नमेंट्स या कंपनीज आपकी हर एक्टिविटी देख सकते हैं। डाटा किसके पास है, कैसे यूज हो रहा है, यह सोचना जरूरी है। बायस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एल्गोरिदम सब पे इक्वली एक्यूरेट नहीं है। गलत पहचान से इनोसेंट लोगों को नुकसान हो सकता है। टेक्नोलॉजी फेयर और एक्यूरेट होनी चाहिए सबके लिए। तो दोस्त या दुश्मन, ये डिबेट सिंपल नहीं है। बैलेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉज, डेटा प्रोटेक्शन और मिसयूज से बचाव। फ्यूचर हमारे हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए, डिस्कशन शुरू करते हैं। कभी लगा है कि एक गेम कैरेक्टर आपको सच में जानता है? सोचो, एक दुकानदार जो आपकी पिछली विजिट याद रखता है। यह सिर्फ कोड नहीं है, ये एआई है। दुकानदार आपको आपके नाम से बुलाता है। अचानक गेम की दुनिया जिंदा महसूस होती है। कैरेक्टर याद रखते हैं, रिएक्ट करते हैं। एआई गेम्स को डायनामिक ब्रीदिंग इकोसिस्टम में बदल रहा है। दुश्मन आपकी टैक्टिक्स के हिसाब से अडॉप्ट होते हैं। टीममेट्स स्मार्टर तरीकों से आपकी हेल्प करते हैं। हर जानवर, हर ड्रैगन, हर एनपीसी अब उसकी अपनी इंटेलिजेंस है। प्लेयर और गेम के बीच की लाइन ब्लर हो रही है। यह बेहतर ग्राफिक्स के बारे में नहीं है, यह ऐसी दुनिया के बारे में है जो रियल लगती है। हम एक रिवॉल्यूशन से गुजर रहे हैं। एआई सिर्फ यह नहीं बदल रहा कि हम कैसे खेलते हैं, बल्कि यह भी कि गेम्स कैसे बनते हैं। दुश्मनों से जो आपकी चालें सीखते हैं, दोस्तों तक जो आपसे सच में बात कर सकते हैं, फ्यूचर आ गया है। इस नए एरा में डाइव करने के लिए तैयार हो जाओ। हम एक्सप्लोर करेंगे कि एआई गेम्स को कैसे स्मार्टर, ज्यादा रियलिस्टिक और बहुत ज्यादा मजेदार बना रहा है। गेमिंग में एआई का युग शुरू हो गया है। ट्रस्ट मी, आप इसे मिस नहीं करना चाहोगे। यह एक वाइल्ड राइड होने वाली है, सरप्राइजेस से भरी और शायद कुछ नए दोस्तों के साथ भी। चलो शुरू करते हैं। पुराने गेम्स में दुश्मन सीधी लाइनों में चलते थे, स्क्रिप्टेड और प्रेडिक्टेबल। आज एआई पावर्ड दुश्मन टैक्टिकल हैं, कम्युनिकेट करते हैं और आपके मूव्स पर रिएक्ट करते हैं। वे पैनिक करते हैं, चार्ज करते हैं या पीछे हटते हैं, हर बार कुछ नया। अब गेम इम्प्रोव कॉमेडी जैसे हैं, स्क्रिप्टेड नहीं। हर प्लेथ्रू अलग होता है, हर मिशन नया एक्सपीरियंस। यही है आधुनिक गेमिंग में एआई का जादू। चलो एआई को एक्शन में देखते हैं। द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में दुश्मन कुत्तों का इस्तेमाल आपको ट्रैक करने के लिए करते हैं। आपका नाम पुकारते हैं और जब कोई दोस्त गिरता है तो इमोशनली रिएक्ट करते हैं। हर लड़ाई तनावपूर्ण और अप्रत्याशित लगती है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो बी में लॉस सैंटोस एआई की वजह से जिंदा है। पैदल यात्री रिएक्ट करते हैं, ड्राइवर गुस्सा होते हैं और अराजकता स्वाभाविक रूप से फैलती है। बंदूक निकालो, लोग बिखर जाते हैं या पुलिस को बुलाते हैं। कार क्रैश करो, कोई लड़ाई शुरू कर सकता है। माइनक्राफ्ट एआई मॉड्स के साथ सिंपल मॉब को क्लेवर एडवर्सरी में बदल देता है। ज़ॉम्बी बनाते हैं, ट्रैप्स से सीखते हैं और मिलकर काम करते हैं। एआई सिर्फ एक चीज नहीं है, यह सिस्टम्स का एक कलेक्शन है जो दुनिया को इमर्सिव बनाता है। यह दुश्मन की टैक्टिक्स, शहर के जीवन और यहाँ तक कि जानवरों के झुंड को भी पावर देता है जो आपका शिकार करते हैं। मकसद दुनिया को कम प्रेडिक्टेबल, ज्यादा जिंदा बनाना। जब एआई सही ढंग से किया जाता है तो आप भूल जाते हैं कि यह कोड है। आप बस एक जिंदा दुनिया देखते हैं। आपके हर एक्शन पर एक बिलीवेबल रिएक्शन मिलता है। यही स्मार्ट एआई की पावर है। यह गेम्स को स्टैटिक से डायनामिक में बदल देता है। हर एनकाउंटर यूनिक होता है, संभावनाएं अनंत हैं। एआई अविस्मरणीय गेमिंग पलों के पीछे का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। एआई सिर्फ गेम्स में नहीं है, यह पर्दे के पीछे भी है। डेवलपर्स प्रोसीजरल जनरेशन के लिए एआई का उपयोग करते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर दुनियाएं ऑटोमेटिकली बनती हैं। हर पेड़ को हाथ से रखने के बजाय एआई सेकंडों में जंगल और पहाड़ बनाता है। एनिमेशन भी आसान है। एआई मूवमेंट्स को ब्लेंड करता है,
जिससे कैरेक्टर स्वाभाविक रूप से दौड़ते, फिसलते और गिरते हैं। मोशन मैचिंग एआई को कुछ उदाहरणों से नए एनिमेशन जनरेट करने देता है। गेम टेस्टिंग, एआई बॉट्स नॉन स्टॉप खेलते हैं, इंसानों से तेज बग ढूंढते हैं। ह्यूमन टेस्टर्स मजे पर ध्यान दे सकते हैं, जबकि एआई ग्राइंड संभालता है। एआई डेवलपर्स के लिए एक सुपर फास्ट, सुपर स्मार्ट असिस्टेंट है। यह समय बचाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है और सीमाओं को आगे बढ़ाता है। वर्ल्ड डिजाइन से लेकर एनिमेशन तक, बग हंटिंग तक एआई जरूरी है। डेवलपर्स बड़ा सपना देख सकते हैं और बेहतर गेम्स डिलीवर कर सकते हैं। जिन गेम्स को हम प्यार करते हैं वे एआई की मदद के बिना संभव नहीं होते। यह गेम्स को कैसे बनाया जाता है उसे बदल रहा है एक स्मार्ट सिस्टम एक समय में। एनपीसीज पहले बोरिंग होते थे, स्थिर खड़े रहते थे, लाइनों को दोहराते थे, मुश्किल से रिएक्ट करते थे। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की वजह से एनपीसीज सच में बातें कर सकते हैं। एक टैवर्न में जाओ और बारटेंडर से किसी भी चीज के बारे में चैट करो, वह हर बार कैरेक्टर में जवाब देगा। एनपीसीज की पर्सनालिटी हो सकती है ग्रम्पी, चीयरफुल या कुछ भी बीच में, लेकिन यह और आगे जाता है। एनपीसीज आपको याद रख सकते हैं और इमोशनली रिएक्ट कर सकते हैं। दुकानदार से रूड, वह याद रखेगा और अगली बार कीमतें बढ़ा देगा। उसकी मदद करो, वह आपको एक दुर्लभ आइटम दे सकता है। एनपीसीज के साथ रिश्ते विकसित होते हैं, जिससे हर इंटरेक्शन सार्थक हो जाता है। क्वेस्ट्स बातचीत से उभर सकती है, सिर्फ स्क्रिप्टेड इवेंट्स से नहीं। ग्रामीणों से बात करके और विसंगतियों को देखकर रहस्य सुलझाओ। गेम आपकी कहानी बन जाता है, आपकी पसंद से आकार लेता है। एनपीसीज कार्डबोर्ड कटआउट होना बंद कर देते हैं, वे एक आत्मा के साथ वर्चुअल बीइंग्स बन जाते हैं। यह इमर्शन का अगला स्तर है। हर प्लेयर का एक्सपीरियंस यूनिक होता है, दुनिया जिंदा महसूस होती है और आप इसका हिस्सा हैं। भविष्य, ऐसे गेम्स जो हर प्लेयर के लिए पर्सनलाइज्ड कहानियां बनाते हैं। कल्पना करो एक एआई जो आपकी पसंद के आधार पर दुनिया, क्वेस्ट्स और कैरेक्टर्स बनाता है। कोई भी दो एडवेंचर एक जैसे नहीं होते। आपकी जर्नी सच में आपकी है। एआई गेम मास्टर्स कहानी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक ह्यूमन डंगो नन मास्टर करता है। कॉम्बैट पसंद है और लड़ाइयां, पहेलियां पसंद है, स्मार्टर चुनौतियां। आपका एआई टीममेट आपकी स्टाइल सीख सकता है, रणनीति बना सकता है और आपके साथ जीत का जश्न भी मना सकता है। इन साथियों की असली पर्सनालिटी और भावनाएं हो सकती हैं। वे डर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं या सच्चे वर्चुअल दोस्त बन सकते हैं। यह दूर नहीं है। हम पहले से ही डायनामिक बातचीत और प्रोसीजरल दुनिया देख रहे हैं। जैसे जैसे एआई बढ़ता है, गेम्स हमारे साथ विकसित होंगे, जिससे अंतहीन कंटेंट और अनंत कहानियां बनेंगी। गेम और रियलिटी के बीच की लाइन ब्लर हो जाएगी। गेमिंग का भविष्य अनंत संभावनाओं का एक ब्रह्मांड है। एआई हर एक्सपीरियंस को ज्यादा इमर्सिव, पर्सनल और इमोशनल बनाएगा। ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो जाओ जो सच में जिंदा महसूस होती है। एडवेंचर बस अभी शुरू हुआ है। इस सारी शक्ति के साथ बड़े सवाल भी आते हैं। प्राइवेसी। अगर गेम्स हमारे बारे में सीखते हैं तो वह डेटा कहां जाता है? इसका मालिक कौन है? हमें अपनी जानकारी की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नियम चाहिए, भले ही इससे गेम्स बेहतर बने। नौकरियां, एआई डेवलपर्स की मदद करता है, लेकिन कलाकारों और टेस्टर्स का क्या? क्या एआई उनकी जगह लेगा या बस उन्हें क्रिएटिविटी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा? फेयरनेस। मल्टीप्लेयर में हम एआई को कैसे संतुलित रखते हैं? बहुत स्मार्ट तो मजा नहीं आता, बहुत कमजोर तो बेकार है। डेवलपर्स को सही संतुलन ढूंढना होगा और हमें यह जानने के लिए जागरूक रहना होगा कि एआई हमारे एक्सपीरियंस को कैसे आकार देता है। हम एक नए युग के कगार पर हैं। एआई गेम्स को और जिंदा और पर्सनल और ज्यादा एक्साइटिंग बना रहा है। टेक्नोलॉजी यहां है। एकमात्र सवाल, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या आप एक सच्चा एआई टीममेट चाहेंगे, एक वर्चुअल दोस्त जो आपके साथ बढ़ता है? गेमिंग का भविष्य हमारे हाथों में है। सोचो एक ऐसा एआई जो तुम्हारे जैसे हर दिन सीखता है, हर गलती पे सुधारता है और हर रिवॉर्ड पे स्मार्टर हो जाता है।
आरएल में मशीन खुद डिसीजन लेना सीखती है, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे टॉडलर चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर से ट्राई करता है। आरएल के एआई एजेंट्स खुद से ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर सही सॉल्यूशन निकालते हैं। आ जाओ, आरएल की दुनिया में घुस जाते हैं और देखते हैं एआई का असली जादू। गेमिंग का वर्ल्ड आरएल के बिना अधूरा है। याद है अल्फागो? आरएल से एआई ने वर्ल्ड के बेस्ट गो प्लेयर को हरा दिया। ओपन एआई का डोटा 2 बोर्ड भी आरएल की वजह से प्रो प्लेयर्स को हरा पाया। आज के गेम्स में एनपीसीज हमन जैसे बिहेव करते हैं, अनप्रिडिक्टेबली हर नए सिनारियो को हैंडल करते हैं, थैंक्स टू आरएल। अब तुम गेम खेल रहे हो या एआई के साथ एक रियल इंसान के अगेंस्ट हो, यह पहचानना मुश्किल हो गया है। रोबोटिक में आरएल ने रेवोल्यूशन ला दिया है। अब रोबोट्स आरएल की वजह से खुद से चलना, बैलेंस बनाना और चीजें उठाना सीख रहे हैं। बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। आरएल से रोबोट्स फैक्ट्रीज में भी अडेप्ट करते हैं, नई चीजें पकड़ते हैं और अपनी ग्रिप एडजस्ट करते हैं। मतलब रोबोट्स अब हर दिन हर टास्क से स्मार्टर हो रहे हैं, मार्स पे भी सरवाइव कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का सपना आरएल के बिना अधूरा है। आरएल एजेंट्स वर्चुअल वर्ल्ड में हर तरह की रोड सिचुएशंस फेस करते हैं, हर बार सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं। टेस्ला, वेमो जैसे जायंट्स आरएल का यूज कर रहे हैं ताकि उनकी कार्स रियल वर्ल्ड में सेफ डिसीजंस ले सकें। हर ड्राइव से आरएल एजेंट स्मार्टर होता जाता है। सेल्फ ड्राइविंग का फ्यूचर आरएल पे ही टिका है। स्टॉक मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आरएल ने अपना प्लेग्राउंड बना दिया है। आरएल बेस्ड ट्रेडिंग बॉट्स मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करते हैं और कब बाई या सेल करना है डिसाइड करते हैं। गोल मैक्सिमम प्रॉफिट। आरएल एजेंट्स लाइव डेटा से अडेप्ट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं और रिस्क मैनेज कर लेते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड आरएल बॉट्स की वजह से हर नए ट्रेड के साथ स्मार्टर हो रहा है। हेल्थ केयर में आरएल मिरेकल्स कर रहा है। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स और ड्रग डिस्कवरी में आरएल एजेंट्स पेशेंट डेटा एनालाइज करते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। सर्जिकल रोबोट्स आरएल से और एक्यूरेट हो गए हैं, रिस्की प्रोसीजर्स सेफली परफॉर्म करते हैं। हेल्थ केयर का फ्यूचर आरएल के साथ और भी सेफ, पर्सनलाइज्ड और एफिशिएंट हो रहा है। फैक्ट्रीज और पावर ग्रिड्स भी आरएल का मैजिक फील कर रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड्स आरएल से पावर सेव करते हैं, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करते हैं और एनर्जी वेस्ट कम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आरएल बेस्ड मशीन्स खुद से सीख के प्रोडक्शन लाइंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। इंडस्ट्री अब सेल्फ लर्निंग मोड पे है, मशीन्स खुद ही अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही हैं। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई सब आरएल का मैजिक यूज करते हैं। तुम्हारे चॉइसेस से आरएल बेस्ड इंजिन्स सीख कर अगला कंटेंट रेकमेंड करते हैं। जितना ज्यादा देखोगे उतना ही पर्सनलाइज्ड सजेशंस मिलेंगे, हर यूजर के लिए अलग। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आरएल ने यूजर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में आरएल ने रॉकेट साइंस को आसान बना दिया है। नासा स्पेस एक्स आरएल यूज करते हैं ताकि मार्स रोवर्स खुद नेविगेट कर सकें। आरएल एजेंट को रिवॉर्ड मिलता है जब रोवर मिशन कंप्लीट करता है या फ्यूल सेव करता है। आरएल एल्गोरिदम्स फ्यूल कंजम्पशन, ट्रेजेक्टरी और लैंडिंग डिसीजंस खुद लेते हैं। स्पेस का फ्यूचर आरएल के बिना इमेजिन ही नहीं हो सकता। तो ये थी आरएल की दुनिया, जहां मशीन्स अपने एक्सपीरियंस से सीखकर हर फील्ड में रेवोल्यूशन ला रही हैं। गेमिंग से लेके हेल्थ केयर, फाइनेंस, इंडस्ट्री और स्पेस, आरएल हर जगह एआई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ किस आरएल का यूज केस तुम्हें सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आरएल का मैजिक अभी शुरू हुआ है।